starting with the chapter biotechnology that either falls into the botany, either falls into the zoology, but is a very important chapter according to the point of view of NEET. So here we are discussing the first chapter of biotechnology, that is the principles and the processes. So first of all, these notes are based on the lines that are the keywords of NCERT, not out of it but important of it. So using live in the first paragraph of the biotechnology, we come on to the line that is using live organisms. Having made tricky questions, points like live organisms or enzymes from organisms is important. So the word there is to catch is live. Genetically modified organisms, you will see this term a lot many times, that is GMO. Now what is a GMO? GMO is any organisms that has its DNA altered. So you see we have altered the DNA. How can we do that? If we take a particular gene out and insert something as in place of it. This might sound complicated, but here we are for making it simple. So GMO is genetically modified organism. So organism is what? Any plant, any animal, any bacteria, any fungi, any organism, so or microbe whose DNA has been altered genetic engineering techniques, through genetic engineering techniques. Okay, so then we have IVF, fertilization, test tube baby, also part of biotechnology. So when we have came on to this chapter, we already know that what a test tube baby is. We know we take a sperm, we take an egg into the test tube, make it fertilize, there we have it for 8 to 16 blastomeres, and then it is transferred into the womb of a mother, that is a uterus of the mother. But then what is it? It is biotechnology. So you must be thinking that what is genetically modified in it? We just let them fuse, but the thing right here is biotechnology. So what is this? Bio means some things that happen naturally. Biology is natural. Technology is when we have an external interference of technology in it. So here we will see how many types of technology we even use. We'll read about ballistic guns and many more. Let's leave it for the further things. For now we have to see that anything that is being assisted by human efforts in something that has to happen naturally. In biology, some interference of human through technology is biotechnology. According to the European Federation of Biotechnology, so EFB is this whole association. This question has been asked a lot many times in the previous year questions. So you have to see this. This question will be repeated in your minors and majors and all the test series that you give too. So attention here. European Federation of Biotechnology gave a definition of biotechnology as the integration of natural science and organism, cells, parts thereof, and molecular analogues to give products and services. So this definition is a hell lot to perceive in one shot. Let me break it down for you. The integration is जब मैं दो चीज़ों को लूँ उसे एक में मिला दूँ. So the integration of natural science, जो कि मैंने बोला natural science is what? It is biology. And organism, cells, पार्ट्स देयर ऑफ. अब मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात ना करूं बिकॉज ऑर्गेनिज्म इज़ व्हाट? ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम वाला, टिश्यू, सेल. सो सेल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ. सेल के भी पार्ट्स होते हैं. DNA इज़ अ पार्ट ऑफ सेल, इट इज़ इनसाइड इट. एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग. सो molecular basis of inheritance must have been taught till yet, so you must know that what these DNA, RNAs, ribosomes and all these things are for products and services. So either I can make out products, or I can use the services. So we'll see all this in the next chapter, that is biotechnology ke uses. Then we have principle of biotechnology. So we will discuss about two things right here. First is genetic engineering. So what is genetic engineering? Let's break down the word. Genetic is something that has to do with DNA, RNA, the genetic makeup of an organism inherited by the parents, right? And engineering. What is engineering? When we have this human interference in something, that is like to make a thing, like break a thing. So we will do both. We'll break a gene, we'll insert a gene. This is what is engineering. For DNA, RNA, sterile change phenotype of organism,
products. Okay, so this has to be in there. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी ऑर्गेनिज्म का कुछ मेकअप चेंज कर दूँ, जेनेटिक मेकअप चेंज कर दूँ, या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेनिंग एनवायरनमेंट ओनली फॉर द डिज़ायरेबल वंस। तो हम बहुत सारे लेबोरेटरीज़ में चीज़ें करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं, बट अगर मुझे कोई सी भी चीज़ चाहिए, अगर मेरे को कोई करना है एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्टेफाइलोकोकस पे मान लेते हैं, तो क्या मैं उसे स्टेराइल एनवायरनमेंट में रख सकती हूँ नॉर्मली? नो। इवन इफ़ यू हैव दिस प्लेट जो कि बहुत अच्छे से साफ़ है ऑन द टेबल, इट इज़ नॉट स्टेराइल. व्हाट इज स्टेराइल मीन्स? स्टेराइल मीन्स फ्री ऑफ every microbe. We can't see them, but microbes are everywhere on our hand. Even if you wash them, even if you do everywhere. So what do we do about it? So the thing is कि during experiment you can't afford any microbe over there. So if you want only staphylococcus, you have to eliminate every other. So that is bioprocess engineering that makes up a sterile environment to carry out the experiments. Then we have asexual reproduction preserves genetic information, sexual reproduction permits variation. So this is just a line we all know about it from like standard 9th or 10th, even 8th. But the thing is, here we are. Asexual reproduction preserve करता है, it is exactly identical, it is like cloning or something. Sexual reproduction permits variation, and this is a thing we also read about it in 11th, meiosis, mitosis. So here it is. Why did biotechnology had to be introduced? Okay, now this is something makes you, whenever you start a chapter, this is a question in your head. Why was it even considered in the first place? So here it is. Why traditional procedures, multiplication of undesirable with desirable genes. So this is just keywords. I'm telling you what it is completely. Traditionally if you wanted to do something, and what is this something will be completely dealt in the next chapter, but मैं ये नहीं बोल सकती हर चीज़ next chapter में, तो I have to give you a idea of what is actually happening. तो हमने इंसुलिन चाहिए होता है हमको, तो इंसुलिन कहाँ से आता है? Everyone would have a diabetes patient in their home and you must have seen them getting injected by insulin. First of all, ये भी एक बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि क्या इंसुलिन ओरली एडमिनिस्टर किया जा सकता है? सो नो, insulin is not orally administered, it is always injected. This is a previous question as well, by the way, and a tricky question as well, by the way, because it is not from NCERT. What is in NCERT is a question और उसका आंसर आप पे छोड़ दिया गया है, तो इसे अच्छे से याद रखें. तो इतना सारा इंसुलिन आता कहाँ से है? इट्स नॉट लाइक ब्लड डोनेट करते हैं तो हम भी इंसुलिन जाके डोनेट कर देंगे जो डायबिटीज़ पेशेंट के लगेगा. नो 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 नो, इट इज़ समथिंग लाइक उससे बनाया जाता है. कैसे बनाया जाता है? पहले तो क्या किया जाता था, दूसरे ऑर्गेनिज्म, हॉर्स, पिग, इन सब से लेके इंसुलिन डाल दिया जाता था. बट अब खुद ही सोच के देखो, इफ़ यू आर अ ह्यूमन, पिग का इंसुलिन आप में कुछ, तो अगर मैं सिर्फ दूसरे ब्लड ग्रुप की ही बात करूं, अगर वही आपका सेल की इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर सकता है, आप देखेंगे CMI होती है, वो डिस्ट्रक्शन करना चालू कर देती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं उसे. जब किसी ह्यूमन का ब्लड ही किसी ह्यूमन में काम नहीं आ सकता, तो क्या किसी पिग का इंसुलिन आप में बायोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा. तो प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी होगी कि हम ह्यूमन का इंसुलिन ही ह्यूमन में इंजेक्ट करें. तो वो कैसे करेंगे हम? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट. तो यहाँ पे मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी को क्यों इंट्रोड्यूस किया. अच्छा, पहले के जो मेथड्स थे वो पूरा का पूरा जीन ट्रांसफ़र कर देते थे. अब मुझे कुछ अच्छी बात लग ही नहीं रही है उस जीन में, तो मैं उसे क्यों ट्रांसफ़र करूँ, और हेक्टिक भी हो जाएगा. तो मुझे अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन पसंद है, लाइक मैं एक इंसान की बात करती हूँ, एक इंसान है जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट वो सिंगिंग में, डांसिंग में बहुत ज़्यादा ख़राब है, मान लेते हैं, ठीक है. और अगर मैं दूसरे इंसान को चाहती हूँ कि वो इंटेलिजेंट बने, तो अगर मैंने उसका पूरा का पूरा DNA उसमें डाल दिया, तो वो तो सिंगिंग डांसिंग में ख़राब भी हो जाएगा. तो अगर मेरे में ये एबिलिटी होती कि मैं सिर्फ उसका इंटेलिजेंस वाला जीन उसमें डाल दूँ, तो दैट वुड हैव बिन more beneficial. तो वही बायोटेक्नोलॉजी है. सो वी सी राइट हियर,
And next we see a piece of DNA, when it gets integrated into the genome of a recipient, it may multiply. So you can see the capital letter, that is it may multiply and be inherited with host DNA. तो अभी हम पूरे बायोटेक्नोलॉजी के ना प्रोसेसेस देखने वाले हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप देखने वाला है. हम 8-9 करके स्टेप्स देखेंगे जो कि हर बार पूछे जाते हैं, कि या तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेप है कौन सा नहीं है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो क्या होता है, आपको अरेंज करना होता है कि सबसे पहले कौन सबसे एंड में कौन. तो वो क्वेश्चंस देखे ना जिसमें DEFCBA ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं, वो क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. तो इट में, तो ज़रूरी नहीं है ना कि पूरा का पूरा वो एक्सेप्ट कर ही जाए प्लाज्मिड. अब प्लाज्मिड क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे कहने वाले हैं कि मे, चांसेस हैं कि हो, चांसेस है कि ना हो. एवरीथिंग इज चांसेस, सो देयर इट इज़. Main requirement for recombinant DNA technology is origin of replication. Now I can't tell you कितनी बार क्वेश्चन आया है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉरेन DNA या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हमें लगता है यार फॉरेन DNA कितना इंपॉर्टेंट है, यार वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. बहुत सारे कंफ्यूजिंग टेम्पटिंग ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट स्टिक टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ अ हाई प्रायोरिटी चैप्टर. सो एंड आई थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग, है ना, नॉर्मल रेगुलर बायोलॉजी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस. नाउ ये स्पेसिफिक DNA ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वी हैव टू रेप्लिकेट द DNA दैट वी आर पुटिंग इनटू इट. तो उस रेप्लिकेशन का ओरिजिन कहाँ से होगा, तो रेप्लिकेशन हम पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं, तो उसका ओरिजिन ही नहीं होगा तो बाकी सब तो वैसे ही ख़त्म है. तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसे कहते हैं प्री रेक्विजिट, है ना, प्री रेक्विजिट कहते हैं इसे. रिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर ऐसे वर्ड्स आए तो घबराना नहीं है, प्री रेक्विजिट ध्यान रखना है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन. ऑब्वियसली ओरिजिन का मतलब इनिशिएशन ही होता है, रेप्लिकेशन का मतलब रेप्लिकेशन ही होता है, तो इट इज़ अ ईजी लाइन. ऐसे बड़े बड़े शब्द को देखने घबराना नहीं है.